हां मॅडम. हॅलो. हॅलो. हां 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 बोला सर. हां मॅडम. करायचं का आपण हां ट्रायल हां वगैरे? एकदा बघावं लागेल. हो एकदा बघावं लागेल ट्रायल. एक मिनिट. सर वेलकम सर. डॉक्टर हो, साळुंके सर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. हां तुमचा आवाजही क्लिअर आहे सर. आहे आणि ना, व्यवस्थित आहे आवाज? हां येस कॅमेरा पण व्यवस्थित आहे सर. ओके, ओके. होतंय ना मॅडम? सर सर थोडंसं प्ले होऊ द्या ना. हो, प्ले होऊ देतो. पण आता हे ब्लॅक स्क्रीन चांगली वाटते का? नाही राहू द्या सर. नो प्रॉब्लेम. हं. कसं करता? अ, बारा वर काय आहे का बघा. एकच मिनिट हां. सेंट्रल बारा वर काय आहे का असं बघा बघतो. बॅकग्राऊंड. आपला किंवा मग आपला कॉलेजचा फोटो टाका बॅकग्राऊंडला. ह्याचा लोगो भेटतो का ते? कॉलेजचा फोटो टाका वाटलं असेल. त्याच्या ॲड होतो का लोगो बघतो मी, चेक करतो. बाकी तर येत आहे ना साऊंड व्यवस्थित? हो आवाज आला clear. हो हॅलो. आवाज क्लिअर आहे सर. आवाज हो क्लिअर आहे आवाज ना? क्लिअर आहे सर. हां. येस आवाज क्लिअर. ओके. एक मिनिट. अशी ब्लॅक स्क्रीन राहिली तर काय प्रॉब्लेम वाटतोय का तुम्हाला? नाही 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 सर काहीच प्रॉब्लेम नाही. राहू द्या तसंच. ब्लूटूथ मुळे सगळं व्हायला रे घोळ बाबा इथं फेकून दे खड्ड्यामध्ये इथं काहीच कनेक्ट बहुतेक तू म्हणजे माझ्या याला कनेक्ट झाला काय Dr. Bhakte sir Baba. is also joined with us. Sir, I welcome you in this program. मॅम किती वाजता सुरू करायचं आहे? आपल्याला 4 वाजता सुरू करायचं सर. ठीक. प्रोग्राम स्टार्ट 4 वाजता होईल. ओके. इथून बंद करते.
असं ठीक वाटतं मॅडम? हॅलो. ठीक आहे सर, ठीक आहे. ठीक आहे ना? का वेबसाईट हो, ठेवायची? वेबसाईट टाका, चांगलं वाटतं. आणि सर जेव्हा आपलं कॉलेज सॉन्ग हे होईल ना त्यावेळेस सगळ्यांचे माईक जे आहेत ते बंद राहू द्या, कोणाचाही आवाज नको. पण देशमुख आता सर. ते ऍडमिनला म्यूट ऑन करून ठेवावं लागेल. सांगितलं मी तसं त्यांना. हो. आता वेबसाईटचं पेज दिसतंय ना? दिसतंय सर. मग आता फक्त वेबसाईटचंच पेज दिसतंय का विंडोज पण दिसतायत आपल्या? नाही, वेबसाईटचं पेज आपल्या हां. आणि विंडोज एका साईडला इकडे रोला सगळ्यांची. ठीक. असंच राहू द्यायचं का लोगो ठेवायचा फक्त? राहू द्या, हे असं चांगलं आहे. तर हे असं राहू दे, छान दिसतं. हे असं राहू दे. एवढंच राहू द्या सर बस वरचं, झालं. बाकी नको. गुगल पण दिसतंय. देशमुख सर. देशमुख सर. पाटील मॅडम त्यांची पीपीटी शेअर करणार आहेत बरं. बोला. काय हरकत हां, नाही. त्यांनी तसं सांगितलं की मी शेअर करते म्हणाले. मॅडम झाला तर काय? मॅडम नाहीत आणखी झाल्या जॉईन. हे ना, हे मास्क खूप छान आहे, कम्फर्टेबल, चांगलं आहे. पहिल्या दिवसापासून मला आवडलं ते. माझा आनंद फक्त एक दिवसासाठी बंद कंटिन्यू ऑपरेशन नाही. तसेच 2 दिवस एकच लाईफ, याची लाईफच एक दिवस. फक्त एवढं की याच्यामध्ये त्रास आपल्याला असं व्हायलाय की कान आपले दुखत, त्यासाठी ते याची पाहिजे, बांधायचे असतात ना मेंच्या तशी पाहिजे. हिरव्या कपड्याचे कधी चांगले बघा कपडे.
मॅडम, हॅलो मॅडम, हॅलो हा देशमुख सर बोला ना. मॅडम, ते ओव्हरऑल फीडबॅक तुमचा ना? हा, ओव्हरऑल फीडबॅक जे म्हणले आपण. फीडबॅक 26/4/2021. बरोबर. बरोबर ठीक. बरोबर. मॅडम आल्या का? येस. व्हेरी गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग. सगळ्यांना नमस्कार. नमस्ते मॅडम सर. सगळ्यांना नमस्कार मॅडम. नमस्कार. गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हनिंग. कस काय अभिजित, काय चाललंय? फाईन मॅडम, तुमचंच सांगा. बस मजेत. वक्ते सर नमस्कार. मॅडम वक्ते सर हा आले? नसेल मॅम. आपले सगळे जॉईन झाले ना आता. स्टार्ट मॅडम, काय करायचं? स्टार्ट करायचं का? Shall we start? Yes, madam. We can start now. Yes, okay. Good evening, one and all. I welcome you all in the online national level 7 days faculty development program on post-COVID and higher education, organized by Internal Quality Assurance Cell of Nutan Vidya Mandir Education Societies, late Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parbhani. This year, we have decided to organize this activity on online mode due to COVID-19 pandemic situation, and I feel very proud to say that we have received a huge response from almost all the states of India for this online FDP. Around 700 participants participated in this online FDP, and we are trying our level best to give a delicious, knowledgeable feast to the participants. Over here, this is the last day, and this is the valedictory program of the online FDP, and the dignitaries of the valedictory program are Honorable Dr. Sangeeta Auchar Madam, Vice Principal late Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parbhani, and the President of the valedictory program. The chief patrons are Honorable Shri Hemantrauji Jamkar Saheb, President Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani, Honorable Advocate Shri Kiran Rauji Subedar Saheb, Vice President Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani, Honorable Dr. Abhay Subedar Saheb, Treasurer Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani, Honorable Shri Vijayarauji Jamkar Saheb, Secretary Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani, Honorable Dr. Sanjay Takalkar Saheb, Joint Secretary Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani, Honorable Dr. Vasant Bhosle Sir, Principal, late Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parbhani. All the resource persons of the online FDP, Dr. Prashant Vakte Sir, Dr. Rohidas Nitonde Sir, Dr. Nitin Darkunde Sir, Dr. Somnath Yadav Sir, Dr. Pallavi Bhosle Ma'am, Dr. Vittal Gore Sir, and today's resource person, Dr. Vaijanta Patil Madam, and all the participants who joined us from almost all the states of India. I welcome you all on behalf of my college. At first, I request Dr. Abhijit Sarnaik sir to play the college song, and I also request all the participants to stand up for our college song. Dr. Abhijit Sarnaik sir. This song is written by Mr. Jairam Ghangav sir, former Associate Professor and Head, Department of History, and composed by Ms. Pallavi Kulkarni ma'am, Assistant Professor of Music. I request all the participants to stand up for our college song.
भूमीचा भव्य वारसा जिजाऊ तारा मदर तेरेसा सावित्रीची ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात मीरा अहिल्या संत जना भावभक्तीची देई प्रेरणा मीरा अहिल्या संत जना भावभक्तीची देई प्रेरणा धन्य झाली लता गीतातुनी राणी लढुनी रणात ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात स्वराज्याचे सुराज करण्या सज्ज होऊया कष्ट करण्या स्वराज्याचे सुराज करण्या सज्ज होऊया कष्ट करण्या आशेचा हा दीप लावूया भयान अंधारात ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात इंदिरा सवे वीर माताना कमलाताई जामकराना इंदिरा सवे वीर माताना कमलाताई जामकराना वाहू आदरांजली स्वरातुनी ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात समतेची ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात ज्ञान मंदिरात ज्ञान मंदिरात Thank you. Thank you, one and all. This song is written by Mr. Jairam Gandgav sir, former associate professor and head Department of History, and composed by Miss Pallavi Kulkarni madam, assistant professor of music of our college. I express my thanks to Dr. Abhijit Sarnaik sir. Turning to the main program, I request Miss Nirmala Jadhav madam to deliver introductory speech as well as read the report of the 7-day online FDP. Miss Nirmala Jadhav madam. Jadhav madam, your mic is mute. Please unmute your mic. नमस्कार, आवाज आती है मैडम? Yes. नमस्कार, आप सभी महानुभावों का पुनश्च मैं अध्यापिका
निर्मला जाधव हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर के 7 दिनों के एफडीपी कार्यक्रम के समापन सत्र के अध्यक्ष महाविद्यालय की उप प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता अवचर मैडम, इस कार्यक्रम में 7 दिन अपनी अमोघ वाणी से समृद्ध करने वाले सभी सम्मानीय वक्तागण, जिसमें उल्लेखनीय नाम है डॉक्टर PS पक्ते सर, डॉक्टर रोहिदास नितुंडे सर, डॉक्टर नितिन डारकुंडे सर, डॉक्टर सोमनाथ यादव सर, डॉक्टर पल्लवी भोसले मैडम, डॉक्टर विठल गोरे सर तथा आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर वैजंता पाटिल मैडम, साथ ही मेरे सभी सहयोगी और महाविद्यालय के इस ऑनलाइन इस समापन सत्र में ऑनलाइन रूप में जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहन, आप सभी को मेरा सादर सहर्ष प्रणाम। 7 दिन चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन एफडीपी कार्यक्रम का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी को इस एफडीपी कार्यक्रम के इतिहास से अवगत कराना चाहती हूँ। महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अविनाश सरनाइक सर की कल्पना से इस एफडीपी कार्यक्रम का जन्म हुआ है। उसका कारण भी यह था कि 15 जून को महाविद्यालय प्रारंभ होता था छुट्टियों के उपरांत, और 15 जून से 1 जुलाई तक अध्यापन का कार्य लगभग बंद ही रहता था, क्योंकि इस समय में महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती थी। और ये जो प्रक्रिया शुरू रहती थी उस समय हम लोग तो खाली बैठते थे। इसमें खाली बैठना यानी केवल पेपर पढ़ना या लाइब्रेरी में जाना, वहाँ पे चर्चा करना या फिर कोई किताब पढ़ना या फिर प्रवेश समिति में छात्रों का मार्गदर्शन करना, यही एक काम होता था। और वो भी ज्यादा समय तक नहीं चलता था, 2 बजे तक तो वो काम भी खत्म होता था। लेकिन प्रधानाचार्य अविनाश सरनाइक सर, जिनको ये बिल्कुल ही नहीं भाता था, इसलिए सर हमें बराबर सर ने यह प्रस्ताव रखा था सभी के सामने कि 15 जून से 1 जुलाई तक का जो 15 दिन का कार्यकाल रहता है, वो अध्यापकों के लिए रिफ्रेश होने के लिए कुछ बौद्धिक सामग्री जुटानी चाहिए या बौद्धिक स्तर पर कुछ तो भी होना चाहिए। इस उद्देश्य से सर ने एफडीपी कार्यक्रम अर्थात रिफ्रेशर कोर्स के रूप में इसका आयोजन करने के बारे में संकल्प किया था, और उसे लेकर ये कोर्स 1999 से जून 1999 से ये आरंभ हुआ था। तब से लेकर आज तक रिफ्रेशर कोर्स के रूप में यह कार्यक्रम अखंडित रूप में आयोजित होता रहा है। प्रतिवर्ष होने वाले इस रिफ्रेशर वर्ग में विभिन्न विषयों पर अनेक विशेषज्ञों को निमंत्रित किया गया था। विभिन्न विषयों में जैसे कि सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, पर्यावरणीय, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि विषयों के साथ ही अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया, छात्र केंद्रित उपक्रम, अभ्यासोत्तर उपक्रम, महाविद्यालय का NAAC मूल्यांकन, सामाजिक उपक्रम आदि अनेक विषयों का समावेश होता रहा है। विगत पिछले 5 वर्षों से इस रिफ्रेशर वर्ग का नामकरण एफडीपी अर्थात फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में हुआ है, अर्थात संकाय गुणवत्ता विकास कार्यक्रम के रूप में चलने वाले इस उपक्रम का आयोजन आरंभिक दौर में महाविद्यालय के विचार समन्वय मंच की ओर से होता था, जिसमें महाविद्यालय के सभी अध्यापक सहभागी होते थे। अब IQAC तथा टीचर एंड स्टूडेंट वेलफेयर विभाग की ओर से इसका आयोजन होता है। इस उपक्रम में पिछले 21 वर्षों में अनेक विशेषज्ञों को निमंत्रित किया गया था, जिनमें प्रमुख नाम थे माननीय शिक्षाविद डॉक्टर नाय डोळे सर, आयुक्त डॉक्टर कृष्णा भोगे सर, माननीय प्रधानाचार्य शरद अद्वंत सर, डॉक्टर विनय तथा साहित्यकार रारम बोराडे सर, डॉक्टर झटे सर, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर मुलमुले सर, योगाचार्य डॉक्टर वानखेडे सर, जलमित्र डॉक्टर गोपाल कालानी, डॉक्टर बाबर सर, डॉक्टर शिंदे सर, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार फड़, गांधी विचारक डॉक्टर सुगन बरंट सर तथा सांसद तथा शिक्षाविद माननीय फौजिया खान मैडम आदि अनेक विद्वानों के नाम इसमें लिए जा सकते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य मार्गदर्शन
इस वर्ग में किया था। इस वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसमें व्यवधान लगभग आ ही गया था, परंतु IQAC की कोऑर्डिनेटर ओम प्रभा मैडम तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर प्रधानाचार्य डॉक्टर भोसले सर के समक्ष ऑनलाइन FDP का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को सर ने भी बहुत सराहा और उन्होंने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए अनुमति दी है। स्टाफ सेक्रेटरी होने के नाते मैं स्वयं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस वर्ष 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के दरमियान इस FDP का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के FDP की यह मुख्य विशेषता है कि यह कार्यक्रम केवल हमारे महाविद्यालय तक सीमित नहीं रहा या राज्य तक सीमित नहीं रहा, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि उस प्रकार से हमें लोगों का जो प्रतिसाद है वो भी मिला है। और महाराष्ट्र से नहीं तो देश के अन्य बड़े राज्यों से, जम्मू कश्मीर से भी इसमें लोग शामिल है। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, मुझे लगता है कि पश्चिमोत्तर जो राज्य है असम वगैरह, वहां से भी इसमें शामिल है। और उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा प्रतिसाद आप सभी ने दिया है। ऑनलाइन मोड पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में सही तो पहली बार हुआ है। इसका आयोजन 19 अप्रैल से उद्घाटन करते हुए हुआ है। उद्घाटक तथा प्रथम वक्ता के रूप में माननीय प्रधानाचार्य तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नांदेड़ के विज्ञान तथा तंत्रज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत वक्ते सर थे, जिन्होंने पोस्ट कोविड एंड हायर एजुकेशन पर प्रकाश डालते हुए हम सभी में आशा की चेतना जागृत की थी। 20 अप्रैल को डॉक्टर रोहिदास नितोंडे सर, जो शिवाजी महाविद्यालय परभनी में अंग्रेजी के विभाग प्रमुख है, आपने ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस पर हमें मार्गदर्शन करते हुए अध्यापन तथा मूल्यांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया था। 21 अप्रैल को डॉक्टर नितिन डारकोंडे सर, जो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के गणित विभाग के सहयोगी अध्यापक रहे हैं, आपने स्वयं तथा NPTEL और MOOC ऑनलाइन कोर्सेज की विस्तार से जानकारी देते हुए इस कोर्सेज की उपयोगिता और छात्रों के लिए किस प्रकार सहायक होती है या हो सकती है आदि के बारे में हमें जानकारी दी है। और 22 अप्रैल को डॉक्टर सोमनाथ यादव सर को निमंत्रित किया गया था, जो शिवाजी महाविद्यालय बार्शी में अंग्रेजी के सहयोगी अध्यापक हैं। आपने स्टूडेंट सेंट्रिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तथा एक्सटेंशन और आउटरीच एक्टिविटीज पर हमें विस्तार से मार्गदर्शन किया था, जो हमारे छात्रों में गुणवत्ता तथा छात्रों के गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से काफी सहायक होती है, सहायक सिद्ध हो सकती है। आपने अनेक ऐसे उपक्रम बताए हैं जिनमें छात्रों का समाजाभिमुख दृष्टिकोण विकसित होना संभव हो सकता है। 23 अप्रैल को डॉक्टर पल्लवी भोसले मैडम निमंत्रित थे, जो सहायक अध्यापिका श्रेयस औषध निर्माण तथा संसाधन संस्थान औरंगाबाद से निमंत्रित है। आपने इंटरेक्टिव क्लासरूम इस विषय पर मार्गदर्शन करते हुए अध्यापन के लिए उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों की जानकारी हमें दी थी। 24 अप्रैल को डॉक्टर विठल गोरे सर निमंत्रित थे, जो हावगी स्वामी महाविद्यालय उदगीर से हैं। आपने कंटेंट डेवलपमेंट पर हमें विस्तार से मार्गदर्शन करते हुए हमें हमारी अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक और समृद्ध बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था। इसी प्रकार पिछले 6 दिनों से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज FTP कार्यक्रम का ये अंतिम समापन सत्र है। इस समापन समारोह के लिए 4 चांद लगाने हेतु हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर वैजंता पाटिल मैडम, जो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मैडम। और अधिक समय न लेते हुए पहले दिन से आज तक आप सभी ने जो ज्ञानार्जन का जो माहौल बनाए रखा है,
इसलिए आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप ये माहौल कुछ पलों के लिए और बनाए रखिए और ये विनती करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for giving brief history of our FDP and for report reading. Now today we have with us the chief guest, Dr. Vaijayanta Patil, madam. At first, I request Dr. Abhijit Sarnaik, sir, to introduce Dr. Vaijayanta Patil, madam. Dr. Abhijit Sarnaik, sir. Thank you, madam. Good evening, everyone. I, Dr. Abhijit Sarnaik, welcomes you all in the last day session of our national level faculty development program. I am here to introduce today's resource person and also my mentor and teacher, Honorable Dr. Vaijayanta Patil, madam, Professor, School of Educational Sciences, Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded. She has a 22 years of teaching experience at UG and PG levels, and her areas of specialization are teacher education and research methodology. Her thrust area of research is teacher education. She published 35 research papers in national, international journals and proceedings, and presented 10 research papers in national, international seminars and conferences. She also has completed two major research projects under her guidance. 12 research students awarded PhD and 15 research students awarded MPhil degree. She works as a resource person in more than 20 seminars and conferences. She also organized 8 seminars and conferences at national and international levels. Presently, she is the Dean, Faculty of Interdisciplinary Studies of SRTM University Nanded, VT member of NCT, Academic Council member of SRTM University Nanded, BOS member of SRTM University Nanded, Pune University, and Solapur University, Solapur. She is also Management Council member of SRTM University Nanded. She also a former director, School of Educational Sciences, SRT University, Nanded. Further, she is the recipient of many awards like Professor Dave Prerna Puruskar by Maharashtra State Secondary Teacher Educators Association and Vaisemi Open University, Nashik, and Guru Ratna Puruskar 2018 by Minasana Foundation, Maharashtra Rajya Marathi Patrakar Sangh and Delhi Samiksha. Now, I kindly request Honorable Dr. Vajanta Patil, Madam, to deliver her lecture. Thank you. Thank you, Abhijit, for giving my so strong introduction. I'm audible. Ma'am, you are audible. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Thank you, Abhijit, for giving my strong introduction. That all dignitaries on this virtual dais, my colleague in the academic council, and my I think they are my he is my guide, Dr. Prashant Vakte sir, Honorable Prashant Vakte sir, the Associate Dean of Science and Technology of Swami Ramananda Tirth Marathwada University, all the colleagues from Kamaltai Zamkar Mahila Mahavidyalaya, today Chairman, Vice Principal Dr. Sangeeta Auchar Madam, Dr. Om Prabha Lonkare Madam, who have frequently contacted me for this lecture and the valedictory session. Firstly, I am very thankful to this college and all the staff for giving me this opportunity to communicate with this all the is a national level FDP program for online teaching or in higher education. The Bhakte sir has given very precious lecture in first day. I think
Now I am giving my lecture on online teaching. That topic has given me for the online teaching, but all 6 days you have listen the all the lecture, very good lectures by Bhakte sir, Nitunde sir, and I think the Darkunde sir in NPTL and Swayam. So I have attended that lectures, very good lectures by given Bhakte sir, Darkunde sir, and all the other guests. So I am try to give my lecture on the online teaching and also the valedictory message for you. I share my PPT with you and try to, and please forgive me if I will made any mistake in my lecture. Is it clear? Yes, ma'am. Is this clear? Okay, thank you. Yes, ma'am. Yes, the screen is visible. Okay. I'm trying to deliver this lecture in 30 to 40 minutes on online teaching learning in the view of teacher educator and pedagogy of teaching and learning of the students and teachers. So it is the new way of online teaching learning to all of us, the faculties and students, as our faculty concern. We are uh, trying to use this methodology for delivering our lecture in online mode of teaching. Why the online teaching is important in this pandemic situation? We are all new for this online teaching. Is the modest and modern methodology of teaching online teaching learning is the modest and a modern popular methodology for the education to KG to PG. All the classes from KG to PG are now going on online basis. Everything in the house and every home, it is the typical world we are listening that our online classes are going on, our online classes are going on. My nephew of a 4-year old is taking Aji. I'm right now I'm joining my nursery class on online. He's taking Janaganam Mana, he's listening the poems, his teacher, his miss is uh, giving her homework, all these type of activities on each and every home, each and every house. We are listening and we are observing this type of activity. But when we think about this online teaching learning, how it is effective, what effect of the this online teaching learning is on the students, what the learning outcome we are getting, who will be evaluate this learning outcome of online teaching. We are taking examinations now. Recently we have taken examination of all the higher education student of university teachers. Bhakte sir is quite known about this type of as a principal of one biggest college, well-known college, and associate dean of this university. He is well known about this examination. What type of learning outcome from this online teaching learning we are getting? It is the question mark behind us. In this lockdown period, only way of teaching learning is the online. We are taking the online lectures on the each and every mobile, in computer, in laptops. But it is the only way we have to reach to our students. So in this lockdown period, this is the only way of teaching and learning that we can do, and it is the safest way of teaching learning in this pandemic situation. And this is the present scenario, and it is the in this present scenario the demand of the time, this the
time is demanding online teaching learning. Now time is demanding online examination also. Now the teachers of higher education are all teachers of higher education are demanding the in the present scenario for the online examinations also. So simultaneously, when we are taking online teaching, we are teaching to the students. When students are learning, then we have to take online examination also, and our demand is to take the online examination. The demand of the present scenario in the COVID pandemic situation, we have to teach online mode, and we have to adopt the methods of online teaching, and we have the adopt to accept the adapt and accept the various method of pedagogies of teacher educations for the effect of teaching. And this method is useful for all, that's the teacher, students, family, and all the community for the safety of the life in the pandemic situation. And as usual, as a teacher education educator and the teacher education field, it one of the method which is the one of the pedagogy that we are adopting for the teacher education faculty, that the online teaching, that the computer and their teaching, it is the one of the method for the teaching from the previous 10 or 20 years long back ago. We have adopted already, and we have included already this type of teaching in our teacher education syllabus also. It is rather, it is new for the academic or the humanities and science teacher, but it is not new for the teacher education and the computer science students or the electronic student. I think it is not new for the science faculty teacher also. It is new for the humanities and all other social science subjects. This is the new methodology of online teaching, but we are already included online teaching or computer assisted teaching learning process in our teacher education program and in the IT uh, computer science subjects. Okay. So it is the demand of this when we think that this is the demand of the present scenario, then what is the good elements of online learning or online teaching learning? The quality of online teaching, when we discuss the quality of online teaching, the first element we have to discuss, that is learner motivation is most important. When I was taking the lectures from previous year, last year, when we have started that, you have also started, we have started online teaching from the mobile phones and laptops and computer, that when student, we call the students, we make the WhatsApp group for students, we mail the students that you have to join for my lectures on online. In first some days, students are not responding for online teaching. Some 2 to 4 students are responding the classes. Then we again and again motivate to the students for joining the online classes, and we pass the message from their peers, their friends, to join the classes. Then it is take time. It was taken time by the students for joining the classes, and after that, students had slowly the strength of the class is increasing. Then, but when I have taken the 30 and 35 online teaching classes, then slowly, then this graph is also give the message on WhatsApp group that I am taking the class on 8:30 a.m. Then 2 students, 4 students, 5 students, 6 students are joining slowly and slowly, because I am taking revision, I am taking the giving the notes, I am taking the evaluation, I am taking the practice for the questions. So this type of scenario of this online teaching learning, that is the graph that firstly
that is increasing, then decreasing. The peak period when we give the motivation to your students to any way that what content you have to elaborating, you have to deliver the content, then learner motivation is the most important thing. That is the psychology of the student is the major element for your online learning. That is present in present mind should be in the class. So second element that I have to discuss with you, that is effective course design. And you have to prepare your notes, you have prepare your lectures for the effective course design. What type of content you have to going to deliver in your class, you have to all design your course, what type of content you are going to deliver in the class. Then the effective online facilitator must be there. You should have to give the content effectively in the class, so student will be participate in the class, and class is very effective and interesting. Then the effective student support is also one of the good element for online learning. It is the necessary to support the student there. Many students are only join the class and mute their mic and mute their video, and they open the window. That you may observe your in your home also, that your wards are also doing that type of activity when their mamas are in the kitchen and they join the class, and when their miss and their teacher are taking the online class and they have to mute the mic, they have to they do the mute the also the video, and open the another window of YouTube and of the game, and they have to usually play the games. And when sometime I have observed that when the schools at 8 o'clock, they are starting at the 8 o'clock. And in this pandemic situation, in the lockdown period, there are not any other another work for the sports and other activities are not there. In the they are not tired. They have usually 8 o'clock. Their mama has forced to wake up and join for the class. They join the class because their mama are trying to force them to join the class. They are joining the class, but after joining the class, mama is not there, any family member is not there, and this situation is also similar for the higher education classes also. They are only join the class and doing their activity. Some students are sleeping on their bed and the teacher are teaching online. This type of situation is I have observed in the many of the classes. So we have to take effective support from the student. Then the interaction must be effective interaction and the sense of community. What type of students behind you, so teacher have to sense of community and effective technology, that what type of technology you have using, it is must be there. So these type of some elements are there. All the elements I am not taking here, but some these are the some elements that effect on the online teaching learning method. Then just I have taken that effective technology you have to use. You are using very effective technology, that in this FDP you are using Zoom cloud meetings, and you are live on the YouTube channels. But when you are choosing the these platforms, many type of platform, in this pandemic situation, the market is growing for this type of communication tools. In the near about, I have searching some communication tool for online teaching,
I have find out 250 to 300 platforms for this communication for the online teaching. But some platforms of there, some communication tools is there, that is Zoom cloud meeting, that need some desktop or mobile phones. Pricing is free. Tool that is audio, video, and chat will be available. This screenshot share will be easy available, that we can do the screen share also. In Skype, these types of all features are there in as like the Zoom cloud meeting. In Google Meet, this type of all the versions is there. That web browser, Android phones, and price is free. In Google Docs, we screen sharing is not there. Device, web browser, mobile devices can be used, but screen sharing is not there in Google Docs. And these type of Google Classroom also, we cannot share the screenshot of the tool. Paperless assignment workflow is there. Variety of communication tools are available, and their Edmodo, YouTube, etc. All type of. I think there is a 400 to 500 communication tool, but you have to choose the communication tool that you have to easy to handle, easy to handle for the students, easy to share for students. That the choice of the teacher. Then what is the guideline for a teacher? Is when you effectively choose the some technology, some platform that I have chosen this. Many times I have chosen Zoom, many times at Google Meet are there. When teacher planning the classroom or plan your class, firstly you have to plan your without planning. Don't take any teaching class. That you have to prepare your class firstly. That you have to question some question raise maybe there. That what to teach, that may be content. आप क्या पढ़ाना चाहते हैं आपके स्टूडेंट को, वो कंटेंट है, तो वो आपने प्रिपेयर करना चाहिए. Please don't copy any content as it is from the net or as it is from the internet. That video, PPT, you take as a reference, and you take the suitable, you made a suitable change in that PPT or the video or the content, and you translate content and then give to your students. So what you have to teach, what type of content, what type of paper, what type of flow charts, what type of graph, what type of experiment you have to teach, that you have to plan first. Then why teach? आप जो कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं वो आप क्यों पढ़ाना चाहते, ये भी आपने एक सवाल आपसे खुद को करना है. You each one have to ask this question to self, that why to teach is the objective of your class, what the learning outcome, what the course outcome, what the program outcome you have designed. That the objective of teaching, outcomes of the teaching must be there. ये content आपने पढ़ाने के बाद आपके स्टूडेंट के सामने कौन सा आउटकम आने वाला है, that you have to prepare firstly the objective of teaching and outcome of your teaching, outcome of your learning, students learning must be there. So why to teach is the most important, that is the objective of your class must be there. Correlate your class with your objectives is must be there. Which material will you
used to teach? What type of material that you have using the video, you are using the PPT, you are using the notes, you are using the PDF file. What type of material will you have to use in teaching? That must be the part of your planning. References for your teaching, you have to prepare your references. What when you have fix your content, that this content I have to deliver in today's period. So what type of references you have taken? You have used the books, you have the net browser, what type of video, what type of PPT, what type of research article you have referred. So you give in your online teaching. How to teach? Objective, you have fixed your material, you have fixed your references, then how that content to be delivered, which methodology you are going to adopt for your teaching, that you are using experimental demonstration method, you are giving the lecture method, you are giving the questioning method, you are giving elaborative method, you are giving the stimulus variation method, various type of method. That method, which method you have using for your teaching, that you have to plan. Assess your student after delivering that content, after giving the lecture on online. You have to shortly assess your students, that how much content they have gained, how much content they have reached in their mind, what outcome they have uh, gained from your teaching. That assess your student, that evaluate your student in short questions. That various type of evaluation methods you have to use. You have to ask questions, you have to yeah, give the seminar, you have to give the discussion, brainstorming topic, various types of evaluation method that you can use in your class. Inform your student about your content previously, that you have communicate your student in brief, that what type of content you have to going to deliver in your lecture. That inform your students. Then prepare for the technology. When you have to going to conduct an online lecture, then choose your platform, that Edmodo, Zoom, Google Classroom, YouTube. Choose platform and fix your platform. And once you have choose, um, suppose you are teaching BA English first year, first semester, you are using Google Classroom. Then for that class, please use one type of platform. Don't change frequently. Today I am using Google, tomorrow I am using Zoom, day after tomorrow I am using Edmodo. That type of activity, please don't do not that type of activity. For one class, one choose one platform. If you are very if very prompt in using the various platform, but you don't experiment on your students frequently, don't change it frequently your platform. Use open access platform, don't change the platforms frequently. Prepare the list for the software and hardware which are needed for online teaching. Collect all hardware and organize them, that I want the my camera, that laptop, phone. When sometime when I take the lecture, I miss my mic or the camera in another room. So I call my daughter or son, please सोनू प्लीज लाके दो ना, बीच में ये फिर ऑनलाइन टीचिंग में वो डिस्टरबेंस हो जाता है और अपने बच्चे ऐसे देखते हैं कि मैडम को भूल गए. So don't miss your hardware and software anywhere. Please organize well in advance, so your student can take the interest in your. So
download all software as per your requirement, that if you are out having the Zoom, Google Classroom, Edmodo, that type of app must be in your mobile phone and your laptop also. Set up all the internet connection, that internet is irregular. All set up an adequate working environment, create a good space for your ऑनलाइन लेक्चर इन योर एवरीवेयर। हम जब घर में रहते हैं तो वो एक बात समझ में ऐसी आती है कि किसी का घर बड़ा होता है, किसी का घर छोटा होता है, ये बात तो अलग बात है, जिसके उसके सभी के घर कोई बड़े ऐसे स्पेशल रूम ही आपके घर में अवेलेबल हो, ये कोई बात नहीं रहती। ये भी हमने सोचना चाहिए, यू थिंक अबाउट दैट। तो जिसके घर छोटे हैं तो भी आपने एक स्पेस वहां पे क्रिएट करके रखने चाहिए, और यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू योर फैमिली मेंबर्स दैट दे कांट डिस्टर्ब your class. So you create a good workspace as your home is also small. Check all the hardware, mic. So I have previously discussed on this topic, mic, speaker and camera, all these things. Check your connectivity, your internet speed, that you have to have the good internet speed. Ensure that no disturbance from anyone at the time of teaching from the family members. One in Marathi, one WhatsApp joke you are when the teacher is teaching on the online lectures, and one all you have read this joke, that one bandya comes, the teacher's daughter is behind him, and bandya asks teacher, ma'am, who are he, she? And this type of jokes are creating in the online teaching, that when we put this type of joke the in the classroom, but so you have to ensure that these types of disturbance, that I am telling, that these types of disturbance is not there, that any family member don't disturb you. Check light facility, that your face is looking, choose a good looking background as per your convenience, and innovative and stimulative discussion must be there in the classroom. Use various techniques of teachings that I have just discuss with you, that you are taking what type of teaching methodology, what type of teaching techniques are you using in your online teaching, that must be there. Involve the students when it is necessary. Give some activities for the students, as in the form of video, or in the form of the notes type, and provide the study materials, that it is not routine that you are delivering the lecture and on the streaming, and students are mute their mics and mute their video, close their video and sleep. This type of environment is must not be there in your class. So provide your study materials, link, videos and PDF. Provide interactive activities for the involvement of students in between the online class. Don't hide your feelings. आपके भावनाओं को मत छुपाइए। अगर आपको कुछ टीचिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपके सामने हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। अगर आपके टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आपका कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके स्टडी मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बात यू हैव टू डिस्कस फ्रीली विथ योर स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी फीलिंग, दैट you don't hide the feelings, so you can easily communicate with the students, and student will help you in your teaching. Share other useful link to the students that you have referred for your online teaching. Keep video length short. When we are teaching the online class, you are taking the 50 minutes and 1 hour class, but it is boring.
it is not the convenient for you and your students also. It is the 20 minutes or 30 minutes class, you give the break to the students and then again start the lecture. uh, Show your face, it is the more effective. Some teachers hide their face and they are teaching their lecture, but it is not the good for the, as per the view, as per the psychological pedagogy views. Show your face, it is the more effective. Give specific instruction to the students in the video. When you are streaming the video, test your slides. When you are using the ppt, then the ppt's font, color, design, that is the most important. It is visible, so it is their light and color, it is also must be tested out by the teachers. Don't disturb if internet connection disconnect. Use monitor method or team teaching method. Many times internet connection may be disturbed or disconnect, but you have to use the monitor method. You give the instruction to the students that please handle the class when till my internet connection be regular. So team teaching method also be used by the teacher in this online teaching. Communicate to the students regularly, it is the most important thing in the online teaching. But because the student is not in the face-to-face classroom, so they are on the online, so via phone call, email, social sites, on the WhatsApp, on the telegrams or the Twitter, you must be keep in touch with the student for the helping them if there are any problems. So please keep in touch with your students. Create the some group of students, conduct lectures regularly, it is the most important for your content delivery. Don't disconnect your today I'm taking, tomorrow I'm not taking, day after tomorrow I'm taking, for next day I'm not taking. This type of activity is not accepting from the teachers. So the lectures must be regular. Give assignment to the students regularly so they can study effectively, that which content you have delivered. Timely do the evaluation for the assignment and test. When students submit their assignments and their seminars and their test uh, by PDF or by the online or by online examination when they give, so please evaluate their test papers, their assignment, their seminar evaluation time to time, so they can be regular in your touch for the assessment. Motivate your student must be there. Emotional motivation is the psychological factor that teacher must be adopt. Social motivation and individual motivation. In when you are taking online classes, majorly Sorry to disturb you, ma'am. Please unmute your mic. Yes, yes. your college is the girls college, कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय जो आपका है. It is very needed for the ladies girls students for their more emotional motivation, social motivation and individual motivation also. There are many problems. If they came to college, then nothing is problem for their study and attending the classes. But from when the especially married girls, when married women, when they are attending online classes, that is much more problem. That is the one research problem must be there in this scenario, that how ladies married women can attend the evening and the morning classes, online classes. They are cooking in the kitchen and they are simultaneously attending their online lectures. I have gone through the situation, and in my class there are 14 girls are there,
in the med class, and when I am teaching in 8:30 in the morning, that many girl students have a problem for joining. So you give the motivation. The teacher must give the motivation for their problems. Any problems are there, emotional problems are there, social problems are there, or the individual problems are there, you must give the motivation. Ask and help, ask for the help and give the feedback. If needed the help student individually, so you also get the feedback from them regularly about your online teaching method. And when you give the lecture online, where you are going to deliver your lecture online, then prepare video of that lecture in, then don't stream your lecture online, but prepare videos for your lectures and then upload on the platform. So already deliver to the in social groups, so students can again uh, see see that video, and they are getting the content regularly. This type of this helpful for the students. Is there any problem? My PPT is No, ma'am. visible to you? Yes, ma'am. Your PPT is visible. There is no problem, ma'am. I have internet problem. I have internet problem. So this is useful for students not having internet and on mobile. So upload your video lectures on the platform that you have. Unavailability of the device with the students is the major problem in our area also. So these type of measures you have take for the students. The teacher must arrange the device for the students in college. If some students have not device individually, create small groups of students by their convenience, and you use known and free accessible platform. They are already discussed in previous slide. Provide notes, PDF files for the students. Provide links related video source materials website for the students. Use existing resources, not new. Give quiz in specific intervals. Take attendance, so your students attend your class regularly. If student demand, teacher must use local language for the explanation, it is must. And when you are providing notes, or you are providing the material of the content that you have already delivered in your lectures, it must be needed to translate in their mother tongue. It is must. So some factors that affected in online teaching. There's the age of the teacher, that when I say the Lohkare madam or the Abhijit can use this technology more effectively, that HR madam and me, that cannot. This is the some differences is there, that the young generation can do this, can use this technology more effectively than the previous generation. It is the age factor also affected on this online teaching. Your academic background must be solid, their knowledge about the content, so you can deliver frequently your content to the students. Awareness about technology, you take the help of your son, daughter, or your students for the technology. Skill of handling hardware and software. Socio-economic background of the students is most important for your online teaching, because students must have the all technology on the devices for the attending this online classes. So this factor is also affect on your and online teaching and learning methodology. Unavailability of devices for the students. Teacher have these devices now. All the teacher has the laptops and the Android phone and the computers is available with the teachers, but some students are yet they are not getting the Android mobile, so are they are using their peers and their friends mobiles for the online
teaching and learning method, and technical support is also must be there. These type of factors are affecting your online teaching. For the students, are a student is not here, but some points I have prepare a slide. You know that your teacher may be nervous. You should have to put this point to your before your students, that know that your teacher may be nervous. If any teacher cannot use this technology or this platform frequently or the very smoothly, so there may be nervousness in the teacher. How I can deliver this lecture, how effectively I give this lecture that I give in the classroom. If you effectively teach in the face to face teaching in the classroom, but um, without using softly or smoothly technology, you cannot deliver your lecture smoothly in the online lecture. So students may know that their teacher may be nervous. Don't keep high expectation from their teacher. Join the class on time. This guideline is for students and teacher also. Listen your teacher carefully. No one can teach other. Teacher is your guide. This is the most important thing. And this is some disadvantage in online class. Require more time for the preparation and all these technologies for the communicated to the students. In usually in the face to face teaching, the in the classroom, as time is there, then we go to the class, deliver the lectures, and second teacher is came to the class and deliver his lecture. This is take me more, require more time. This may easier. Online courses may create sense of isolation, that you cannot communicate regularly with the students in online teaching, as your face-to-face teaching is very effective. So online courses allow you to more independent is also. So thank you, take care and be safe. As per my side, I try my best to give you the effective online teaching methods and what type of care should taken by the teacher in online uh, teaching learning method, as per the uh, teacher educator view. As a I'm the basically from the teacher educator, from the faculty of interdisciplinary studies. So I have this type of content with me that I have share with you. Overall, as a part of valedictory, the online education is the wonderful opportunity for us, for the higher education teachers, that the potential flexibility is a undeniable benefit for us, that this is the opportunity for the learning more, um, learning more technologies, more smoother technology in online teaching. It is the growing market for the educators, and therefore on existing career development, that FDP that we have you have organized for this, that therefore an existing career development opportunity for us, for the higher education teachers. You could have the potential to reach students you could never meet in a physical classroom. You meet the student individually in the online teaching mode. Online teaching isn't the something to jump, but it also a reality isn't as daunting as it seems. Do your research, plan your method, and take the leap. Online teaching is relatively new, but so there is real isn't one set way to do it. With some research preparation, you could find yourself on the forefront of the online education movement
in this pandemic situation. So try your best to give your best to your students for their learning outcome and your course outcome also. So please be take care and be safe of your family and yourself. So thank you so much for giving me this opportunity. I thankful to the principal, Dr. Bhosle sir, Dr. Avchar madam, Dr. Lokare madam, and all the my colleagues from the Kamaltain Jamkar Mahila Mahavidyalaya, Parbhani, for giving me this opportunity to discuss with this topic and for the valedictory function. Thank you once again. Thank you, ma'am, for your eloquent speech and a nice presentation on online teaching. Really, this is a paradigm shift from offline to online, and I would like to say that online is like watching a movie, and offline is like making a movie. We hope that the things will become smooth for everyone as early as possible. Thank you, ma'am, for being with us and for delivering an eloquent speech on online teaching. Now, over here, we have arranged participants' remarks as well. So, first of all, I request Dr. Milinda Salunke sir, NVM Mandal's Arts, Commerce and Science College, Lasalgaon, Nashik, Maharashtra, to record his remark. Dr. Milinda Salunke sir. Thank you, madam. Good evening for everyone, honorable forum and all dignitaries. Today, I am going to give you my opinion on the 7-day FDP webinar. All the topics covered in the FDP are important for the future. Lecture on post-COVID and higher education will provide important information on the impact on higher education. Then we learn good information from the online teaching and learning process topics. We have been got detailed information about how it benefits professors and students from the topic of online courses. The student-centric activity topic lecture provided excellent information on how to implement various innovative activities in the college. The e-content development topic lecture provided important and useful information to the professor for online learning in the future. Today's lecture, online teaching, will provide important information for the implement effective online learning. This 7-day FDP program has passed successfully and well organized. The whole FDP program has a great and wonderful. All the lectures pass in on time. The whole FDP has held without any problem. The work of the organizing committee of FDP has a wonderful. The 7-day FDP has very good and the information from all lectures has useful and informative to all. I would like to take has this opportunity to express my sincere gratitude to Principal Dr. Bhosle sir and Vice Principal Dr. Avchar madam of the college. I would like to thanks and congratulate on behalf of all participants to all the organizing committee members and IQC coordinator Dr. Lokare madam. I sincerely thanks to the organizer for giving me the opportunity to vote on this FDP and then stop my opening. Thank you for everyone. Thank you, sir. Now I request Dr. Fateh Singh sir, National PG College, Bhogao, Mainpuri, Uttar Pradesh. Sir, I request Dr. Fateh Singh sir to record his remark regarding online FDP. Sir, sorry to interrupt you, sir. You are not audible. Your voice is low. सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत धीमी है. हाँ, yes sir.
हेलो, हाँ यस सर नाउ यू आवाज आ रही है? नहीं हाँ सर, सर आवाज आ रही है। कम आ रही है, लेकिन थोड़ा- हेडफोन यूज कीजिए सर आप। मैम हेडफोन यूज अभी कर रही हूँ। सर आपकी आवाज आ रही है अभी। अच्छा, ठीक है मैम। सो यू मैं कैन कंटिन्यू सर। जी मैम, यह जो कार्यक्रम है, यह इसका शुभारंभ 19 अप्रैल 2021 से और आज इसका समापन दिवस है। यह है नूतन विद्या मंदिर एजुकेशन सोसाइटी लेट्सो कमलाताई जंकर महिला महाविद्यालय परभाली के द्वारा आयोजित किया गया है। यह 7 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मैंने आरंभ से लेकर अंत तक सहभागिता की है। और इस कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है, इसके साथ साथ अभी हमारी मैम ने, जो निर्मला मैम है, उन्होंने जो सार प्रस्तुत किया, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाविद्यालय के द्वारा सन 1999 से यह रिफ्रेशर कोर्स लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह कोविड-19 जो पोस्ट कोविड यानी हायर एजुकेशन, इस पर जो इसका प्रभाव है, यह भी देखने को मिला है कि समस्त शिक्षक वर्ग अपने घरों में कैद हो गया। इस बीच में विद्यार्थियां वह विद्यालय को नहीं जा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चों तक शिक्षण कैसे पहुंचाया जाए? आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी, यह जो नई तकनीकी है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इसमें मैं कार्यक्रम की संचालिका महोदया डॉक्टर ओम प्रभा लोहकरे जी जो संचालिका हैं, मैं इनको बारंबार बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है कि किस तरह से वक्ता महोदयों को बुलाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। कार्यक्रम के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर वी.के. भोसले सर, जिनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत से लेकर के आज तक वह जो मूर्त रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, वह वास्तव में ही काबिल तारीफ है। मैंने कार्यक्रम के शुभारंभ से लेकर के पहले दिन का जो टॉपिक था पोस्ट कोविड एंड हायर एजुकेशन, उस पर व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो संस्थान बहुत सफल हैं वो तो कार्यक्रम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एरिया के शिक्षक भी हैं उन्हें भी इतना ज्ञान नहीं है। आपके इस FDP कार्यक्रम से जिन शिक्षकों का मार्गदर्शन हुआ है, ज्ञान का संवर्धन हुआ है, वह ही वास्तव में बहुत अच्छा, और उनके ज्ञान में निश्चित ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उसके बाद में टॉपिक था ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड इवोल्यूशन प्रोसेस। उसके बाद में टॉपिक स्वयं NPTEL MOOCs जो मैनेजिंग ऑनलाइन क्लासेस है, स्टूडेंट सेंट्रिक एक्स्ट्रा करिकुलम, ये भी टॉपिक था। इंटरेक्टिव ई क्लासरूम था, ई कंटेंट डेवलपमेंट था। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने जितना विकास किया है, इस FDP 7 दिवसीय कार्यक्रम में उन सबको एक रूप में प्रस्तुत करने के लिए, ज्ञान संवर्धन के लिए हर संभव कोशिश की गई है। और मैं अपने आप में यह महसूस करता हूँ कि मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों के लिए। मैं गूगल मीट के माध्यम से, और कभी जब ये व्यवस्था नहीं थी तो व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी इंटीरियर एरिया में स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए इन सभी तकनीकियों का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ तक मेरा मानना है, यह जो कार्यक्रम है सफलता की, मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट से भी और वंडरफुल की श्रेणी में यदि मैं रखूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे मैनेजमेंट कमेटी को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यह 1999 से लेकर आज तक लगातार कार्यक्रम चल रहा है, और आज जो कोविड जो महामारी है, ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए ज्ञान के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस माध्यम को अपनाकर आपने जो जन तक बेस लेवल पर यह जो प्रसार किया है, यह वास्तव में ऐसे समय में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मेरी अपनी जो ओपिनियन है, मेरा जो अपना विचार है, वो है कि मैं आपकी संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी को, टेक्निकल टीम को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाई, और आपने उन सभी विषयों को लिया है जो ऑनलाइन शिक्षा देने में पूरी तरह से सक्षम है। और आपने जिन वक्ता विद्वत जनों को आमंत्रित किया है, उनका भी मैंने लेक्चर सुने। अभी मैम ने भी जो लेक्चर दिया वो भी बहुत अच्छा था, अति उत्कृष्ट था। इससे निश्चित ही हमारे जो पार्टिसिपेंट साथी रहे हैं वो भी बहुत लाभान्वित हैं। संस्थान के शिक्षक वर्ग तो लाभान्वित हुए ही हैं, लेकिन देश के कोने कोने से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो भी लाभान्वित हुए हैं। मैं आयोजक मंडल को और पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी इससे बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मेरी जो आंतरिक हृदय से जो भावना लेकर जो निकल रही है वो यही है कि आपके कार्यक्रम इसी तरह से और होते रहें,
और ये जो मार्गदर्शन होना चाहिए, शिक्षण का जो मार्ग है जो अवरुद्ध हो गया है, आज हम लोगों की दशा यह है कि शिक्षक, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, मैं यूपी स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। आगरा विश्वविद्यालय के शिक्षक लगभग 16 अब तक एक्सपायर हो चुके हैं। कॉलेज साइन करने के लिए पहुंचना पड़ता था। जो एसोसिएट प्रोफेसर थे वो अब इस संसार में नहीं रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हम लोगों के यहाँ पर 1 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, जिससे हम लोगों की जान अब सुरक्षित है। और बच्चों के लिए आपकी इस टेक्नोलॉजी को अपना करके अपना ज्ञान हम लोग वहां तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके लिए सादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। Thank you, sir. Thank you. Now I request Dr. Sharmila Jajodia, madam. She is from Ramaniranjan Junjunwala Autonomous College, Ghatkopar West, Mumbai, Maharashtra. I request her to record her remark. Good evening, everyone. The online faculty development program on post-COVID and higher education, organized by IQAC of Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya, Parbhani, from 19th April 2021 to 26th April 2021 was very systematic and excellent, as it covered all main aspects of higher education in post-COVID era. Dr. P.S. Vakte opined on post-COVID and higher education on the first day in the context of the digital transformation in higher education in teaching, learning and evaluation, the digital divide and the various initiatives taken by the Government of India in this direction. The lecture set the right tone for the next sessions. On the second day, Dr. Rohidas Nitonde presented on online teaching, learning and evaluation process and highlighted how it is different from offline teaching, learning and evaluation, the role of public and private online platforms, learning management systems and online assessment tools used by various higher educational institutes, individual teachers and even learners to learn themselves by the trial and error methods. Dr. Nitin Darpunde delivered on SWAM NPTEL MOOC courses on the third day and threw light on the importance of online courses, pointed out the ease of access and difference between conventional courses and MOOCs. The available courses on SWAM NPTEL in English and regional languages in 4 quadrants. On the fourth day, Dr. Somnath Yadav expressed on the student-centric extracurricular extension and outreach activities and told how these activities not only bring a change in the personality of students, but also in the higher education institutes and society. He spoke about community college, skill-based certificate courses, their participation in NSS, NCC extension activity, DBT star activities, research-based competitions, Avishkar, workshop, seminars, industrial visits, study tours, bridge courses, and remedial coaching, etc., and shared photographs. Professor Pallavi Bhosle spoke her views on interactive e-classroom on 5th day. She focused on making teaching, e-teaching an interactive process and how a teacher needs to go beyond whiteboard and marker to become a mentor in real sense by audio video recording of lectures, group discussions, assignments, quizzes, tutorial activities, group activities, animation, students preparing videos on current issues, parent-teacher students interactions. On the 6th day, Dr. Vittal Gore talked about e-content development, wherein he covered how the evolution of technology has made digital content a possibility, the process, phases and forms of
developing e-content, text, audios, videos and visuals, etc., creation of e-content, the tools required for it, the availability of online applications for it, and the characteristics of good e-content. On the last day, Dr. Vajanta Patil presented her views on online education, elaborating that it's the safest way of catering education and evaluating students' performance not only for teachers, students, and society, but for everyone. To keep learners motivated and engaged is a big challenge during pandemic. So for the best teaching, teachers need to plan well the lesson, app pedagogy and technology, workspace, keeping in mind the objective, course and program outcomes. I am 100% sure that all the participants will be benefited by the knowledge shared in this national deliberation. Thank you, organizers and resource person, for such an intellectual feast. I am dead sure that every participant must have savored the taste of this feast and will relish in future as well whenever they will apply all these applications, tools shared by the resource persons, the pedagogy to be used, and how to be careful in using technology effectively. Thank you, madam, for giving me opportunity to present my remarks. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Now, finally, I request Dr. Reva Kored, madam. She is from Santosh Bhimrao Patil Arts, Commerce and Science College, Mandrup, South Solapur, Maharashtra. I request her to put her record about this FDP. Thank you, madam. Dr. Kored, Good madam. evening. Good evening to all. नूतन विद्या मंदिर एज्युकेशन सोसायटी संचलित सौ कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी यांनी ज्या 7 दिवसीय ऑनलाईन लेवलवरती नॅशनल लेवलवरती फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आयोजित केला होता. या विषयाचं जे थीम होतं पोस्ट कोविड अँड हायर एज्युकेशन. निश्चितच या महाविद्यालयाचा जो उपक्रम आहे तो स्तुत्य आहे. जो तुमच्या कॉलेजच्या पुरतं जो उपक्रम होता तो अगदी आता नॅशनल लेवलला आम्हा सगळ्यांना त्याचा निश्चितच फायदा झालेला आहे, तो उपयोगी पडलेला आहे. या 7 दिवसीय फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये ज्या रिसोर्स पर्सननी आपले मत मांडलेले आहेत, निश्चितच त्या सगळ्यांचा आम्हाला या कालावधीमध्ये पोस्ट कोविडच्या कालावधीमध्ये जे आपण विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टीचिंग लर्निंग साठी सध्या जे प्रयत्न करतो आहोत त्यासाठी निश्चितच सगळ्यांना याचा फायदा झालेला आहे. यामुळे मी ऑर्गनायझिंग टीमचे, महाविद्यालयाचे, टेक्निकल टीमचे आणि कन्व्हेनरचे या सर्वांचे मी प्रथमतः आभार व्यक्त करते. या 7 दिवसीय उपक्रमामध्ये ज्या वेगवेगळ्या वक्त्यांनी आम्हाला माहिती दिली त्यामध्ये ई क्लासरूम असेल, स्टुडंट सेंटरिंग किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीजच्या बाबतीत असेल किंवा इव्हन स्वयं मूक ऑनलाईन कोर्सेस बद्दलची माहिती असेल किंवा आत्ताच आपण ऐकलेल्या ऑनलाईन टीचिंग आणि लर्निंग यासाठी कसं प्रिपेअर राहावं या सर्व बाबतीत आपल्याला व्यवस्थित जी काही माहिती मिळालेली आहे त्याचा निश्चितच आपल्याला या पुढील आपल्या टीचिंग आणि लर्निंग या दोन्ही कारणासाठी आपल्याला ते उपयुक्त ठरणार आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा व्यक्तिशः आणि सर्व पार्टिसिपंटच्या वतीनं मी काही कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी यांचे आणि टोटल एकूणच ऑर्गनायझिंग टीमचे मी आभार मानते आणि मला इथे माझं मत मांडण्यासाठी संधी दिली याबद्दल मी त्यांचं आभार मानते. धन्यवाद. Thank you, ma'am, and thank you all for your wonderful remark about online FDP. Here,
I would like to make one announcement that all the participants will get certificates of the FDP after submitting the overall feedback of the online FDP, and the overall feedback link will be shared after the completion of valedictory program of the FDP on our WhatsApp groups and on YouTube live chat box. Okay, then you can get the certificates. Then we are also going to share Google Drive link uh, for getting the certificates. Now I request Honorable Dr. Sangeeta Avchar Madam to deliver her presidential address. A very good evening to one and all. I congratulate my organizing committee and all the dear participant delegates who have been all the way with this 7 days online FDP, national FDP program. Honorable resource person for today's session, today's valedictory session, Honorable Dr. Vajayanta Patil Madam from the Educational Sciences, School of Educational Sciences, Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded. Honorable Dr. Prashant Bakte Sir, Principal, DSM's College of Arts, Commerce and Science, Parbhani, and all other honorable resource persons who have facilitated us with their incredible knowledge and their experiences during this national FDP of 7 days. My organizing committee member, Honorable our principal sir, who has been the guiding light during this organization, Dr. Vasant Bhosle sir, all the members who are present here, all my colleagues, IQAC coordinator, Prabha Lohkare madam, she was very particular about organizing this FDP. My other colleague, staff secretary, Nirmala Jadhav madam, Abhijit Sarnaik, and all organizing committee members of my college. Actually, all of you know the patrons of our Nutan Vidya Mandir Education Society. They are always very particular and they are very supportive as far as we go on organizing any event that is from the college level, state level, or national level. So all these patrons of our college, Honorable President, Vice President, and other members, also the secretary of our institution, with the help of these people, with the incredible support of these people, we have been capable of organizing these kinds of events during our history also. Actually, Nirmala Jadhav madam has recorded here, as she has pronounced here, the history of this FDP programs, which was originally named as the refresher course. Am I audible to all of you? Is it okay? Yes, ma'am. Madam? Okay, fine. Yes, ma'am, you are audible. I think this is the most pronounced sentence during the last year, that am I audible? And it may be recorded as one of the sentence of this year during this pandemic situation right from last March. We are pronouncing this because this is the need of time. We don't do anything with that. Okay, so it becomes essential whether you are audible, as madam has said right now, that it is a part of motivation and the student and teacher interaction during this, it is essential. Now, as far as this FDP is concerned, it is very pleasant experience to have been associated with the academic fraternity from all over India during this national FDP. And actually what happened, I used to watch both the sessions. I actually joined myself on the Zoom meeting. And on the other hand, I also used to watch the YouTube live session. That's what I used to watch, when I used to see on this side or that side. That was just to watch the YouTube live session for most of the time, because I used to watch both, because what other
people of the nation, what they say about my institution, about our institution, what are their remarks, what are their comments, that was actually useful for me. And I used to actually frame the judgment regarding our institution, what could be done in future as far as these kind of programs are concerned for better organization. So here, the resource person, very incredible resource person have been available here. The credit goes to Lohkare madam. She has been very consistent in having the contacts with these people, establishing contact with these people, the honorable resource persons, right from the first day. And she has made it all the way possible to bring these very learned, very educated, very experienced resource person for this national level FDP. Actually, the starting, when it is said in English, no, all is well that ends well. So the starting was very well with Dr. P.S. Vakte sir guiding on this occasion as a resource person, and who has been, we are very well familiar with Dr. Vakte sir's experience, his meticulous experiences and his genuineness regarding the reforms in education system that we all were facilitated during his speech as a resource person on the very first day of inauguration. Besides, the second thing is that as the second resource person, my friend and a very wonderful friend of mine, Dr. Rohidas Nitonde sir, who has been always very genuine, very devoted as far as his work is considered, and his experiences also counted a lot and also were helpful for all the respected dignitaries here who have joined all the way from various sections of our country. Nationwide, the different delegates have joined here, and he was very much helpful for these people, for these delegates, to make them adapted to this new method of online teaching. Then another one was Dr. Nitin Darkonde, very experienced and very meticulous once again, and very devoted. Somnath Yadav sir was there. Vittal Gore sir was there. And now, in Marathi it is said, no, ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस. That was in this fashion that Vajayanta Patil madam, very experienced and very devoted, actually academician, she was here for us today to guide us on the valedictory section of this national FDP. Actually, we have had a very good discussions with Patil madam, and she is very devoted as far as the work for women and girl students is concerned. She has discussed about these things when she used to come to our college during the offline sessions. Now it is not possible for some time, it seems. But we have discussed very well what should be done for the girl students while she came to our college. And that was very much useful for us to facilitate our girl students with a lot of facilities and how to overcome the problems of these students. That was actually the guidance that we received from Patil madam many a times, and today also she has delivered a very wonderful lecture, a very delightful lecture on the topic of that is I want to focus some points that she has predicted here, that learner motivation, then effective technology, then interactive sense of community, effective course design, effective online instructor or facilitator, effective student support, etc. So all these things are very important as far as the online teaching is concerned. Actually, online teaching is not that much old. From various last 2 years, I think that we people were associated with online teaching, but it became due to the pandemic. It happened due to the pandemic that we people were enforced to adopt this method of online teaching. Many teachers, as madam has just now said, that age factor is very much important. Many teachers who are middle aged, they are very much reluctant to adopt this method of online teaching. And that's why now there is no alternative.
You have to be adaptive to the online teaching method. And it seems that in the form of corona, there was a big obstacle so that the teachers have to adapt to the online teaching method. It was a big obstacle, like just these Hindi lines that I quote here. सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ती है. So that has happened with the online teaching. Online teaching actually just we have to be adopted. We have to adopt. We have there is no alternative, and we have to motivate our learners. I liked this first point that was quoted by Patil madam, that learner motivation is the most important factor in today's world. If you are not able to motivate the learners, and then what the learners do, that we are habitual. They will just mute the mic, they will put off the video, and they will do their jobs. They will do with their household chores or something else, whatever they used to do, whatever they like to do, or something else like that. So put up this what we say motivation. So increase the interest of the students is the most important task that we all have to conduct. We all have to undertake in today's world. And that's why I love madam's points that learner motivation is the most important, and then planning of the class is the second thing. Because what happens that many of the teachers, they go unplanned for the teaching. They take it easy, but don't take anything easy in today's world, because the students are very much actually clever than you. They are 100 times clever than you, and they will find different methods. If you are finding different methods for them to attract them, they will find different methods to distract you. And that's why it becomes essential. Actually, this organization was a very wonderful phenomena for our own enhancement. And the whole credit goes to Lohokare madam. She was very particular. Actually, Dr. Bhosle sir's guidance is always a motivation, a big motivation for me. When he is present in these types of programs, I am a little bit relaxed. But when he is absent, then the responsibility comes to me. So it becomes even more tough for me to handle these situations and be productive for the academic community. But whatever it is, what are the responses and the reciprocations from the different participant delegates, I came to know that we are a little bit successful. I cannot judge myself. We cannot judge our institution, that you are the people who are going to judge us, right from our resource person and the whole of the entire delegate community. So I think that we were a little bit fruitful in this, what we say, critical situation of the pandemic affected corona wave. And I take this opportunity to express my gratitude to all the learned, respected resource persons from Bhakte sir, Nitin Darkonde sir, Somnath Yadav sir, Vittal Gore sir, Vijayanta Patil madam, and of course I cannot forget Pallavi Bhosle, the youngest of our resource person, who had been very productive and very genuine in her expression in conveying the things that how we can cope up with this online education system and how we can reach to the students community very effectively. One thing becomes clear here. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए. And we keep on going. We'll move, we'll keep on going. चलते रहिए, मंजिल मिल जाएगी, रुके तो वहीं पे रुक जाएंगे. With this hopeful words, I once again thank
Thank you, all the resource persons, all the respected honorable dignitaries, the delegates who have joined for this online national FDP, making it a grand success. I congratulate our whole entire organizing team on behalf of Principal Principal Dr. Bhosle sir, on behalf of myself, on behalf of our learned management, learned and supportive management. I take this opportunity to thank you one and all from the bottom of my heart, and I'm hopeful that you all will be with us during the next academic endeavors which we might be taking, which might be organizing in near future. With these hopeful words, I will just say a few things in Hindi once again, and then I will stop my speech here. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो शायद हमारे पास भी कुछ हुनर होगा, इसलिए आप सब लोग हमारे साथ यहाँ पर आज तक ज्वाइन हुए थे, आज तक हमारे साथ जुड़े रहे, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल द academic fraternity once again. And with these hopeful words, I conclude here my presidential conclusion, and just hand over the rest of the proceedings to Lohkare madam. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Nasim ma'am to express vote of thanks. Dr. Nasim ma'am. थैंक यू मैम। अभी इस प्रेसिडेंशियल कंक्लूजन के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो आज की हमारी वैलिडिक्टरी पर्सन डॉक्टर वैजंता पाटिल मैम, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ और आपकी सादगी की ख़ाइल हूँ, और इसी आपकी सादगी में बेहद खूबसूरती छुपी हुई है, और आपको देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है, और इसीलिए मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक जरूर होनी चाहिए, महक जरूर होनी चाहिए। और आपने अपने इसी लेक्चर की महक से आज के इस सेशन को, आज के सभी पार्टिसिपेंट्स के दिलों को जीत लिया है। और वाकई अगर भोसले सर होते तो वो यकीनन कहते कि पाटिल मैडम देखो मैंने बुलाया और वो आ गई, और उसने मेरे इस इनविटेशन को मान रखते हुए आज के सेशन का जो रौनक है उसको दुगना कर दिया है। तो इस तरह से वो यकीनन कहते हैं, और आपकी फ्रेंडशिप के वो हमेशा गुणगान करते हैं, हमारे सामने आपकी तारीफ करते हैं, और हम तो आपसे हमेशा मिल चुके ही हैं, हमेशा आपसे बात भी करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने आज के वैलिडिक्टरी सेक्शन में हमारी इनविटेशन को कबूल किया, और साथ ही अपने ई कंटेंट या ई लर्निंग पर एक बेहतरीन पीपीटी के थ्रू लेक्चर भी प्रेजेंट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। नाउ थैंक यू लोहकरे मैम। Now today is the 26th April 2021, and this is our last day of this online national level 7 days faculty development program on post-COVID and higher education. तो फिर से मैं आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुई हूँ, और ये हमारी कन्वीनियर लोहकरे मैम की बदौलत। हालांकि मैं रोजा हूँ और मुझे शाम की रोजे की तैयारी करना है, लेकिन बावजूद इसके उनका बहुत ज्यादा इंसिस्ट था, और वो मियाँ बीवी दोनों मेरे घर आए और कहा नहीं थैंक्स तो आपको ही करना है, और आपके इसी इंसिस्ट को लेकर मैं आज यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नसीम बेगम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, लेट सो कमल तैजामकर महिला महाविद्यालय। हालांकि इससे पहले भी मैंने सभी पार्टिसिपेंट को अपना परिचय दे चुकी हूँ, लेकिन आज फिर जो भी नए पार्टिसिपेंट उसमें ऐड हो गए, इसलिए मैंने अपना परिचय दोबारा यहाँ दिया, अपने एक नए अलग अंदाज के साथ। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ, आप तमाम का मैं अपनी दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। और इस 7 रोज नेशनल लेवल ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन होने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी रिसोर्स पर्सन, डिग्नेटरीज, गेस्ट, ऑर्गेनाइजर, कन्वीनर, टेक्नीशियन और खासतौर से पार्टिसिपेंट का मैं निहायत ही अहम और वाइटल रोल रहा है। बिना किसी के भी
कम के हम ये प्रोग्राम कामयाब हो नामुमकिन था। अगर हम चाहते कि ये तमाम इसमें हाजिर हो तभी इसकी कामयाबी निश्चित थी, और अगर इसमें से कोई भी कम हो जाता तो इसकी कामयाबी यकीनन कहीं ना कहीं इसमें कमी आ जाती। इसलिए मैं आप तमाम की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपके इन तमाम की हाजिरी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा, और खासतौर से पार्टिसिपेंट का शुक्रगुजार हूँ। और इसीलिए पार्टिसिपेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि खुशबुएं कि अतर की तरह आई, खुशबुएं अतर की तरह आई, हवाएं खुशगवार लहराई। आप तमाम इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए तो 100 बहारों की बहार आई। आप तमाम इस एफडीपी में आए तो 100 बहारों की बहार आई। यानी कि पार्टिसिपेंट्स अगर ना होते तो हमारा, आपका, ऑर्गेनाइजर का और टेक्नीशियन का कोई काम न था। और कोई मामूली बात नहीं, इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि 750 पार्टिसिपेंट और नेशनल लेवल, जबकि हम इसे हमेशा कॉलेज लेवल पर लेते थे, और कॉलेज लेवल से अचानक ये ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन मोड पर 750 लोगों तक पहुंच गया, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से हमारे कॉलेज के ऑर्गेनाइजर टीम, कन्वीनियर, इसका इसमें एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि रियली आई हार्टली थैंक each and every one of you. Thank you once again. Now, ladies and gentlemen, a very good evening to all. Now, I'm here express to the vote of thanks. Let me first of all start by giving a glory of the Almighty God for making to today's occasion a resounding success. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here and gracious presence of all chief patrons and the resource person of the faculty development program. इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जितने भी जो अहम गेस्ट रहे हैं और चीफ पैटर्न्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉरमोस्ट आई थैंकफुल for our chief guest. I express my sincere thanks to Honorable Shri Hemantrao Jamkar Sir, President Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. I extend my sincere thanks to Honorable Advocate Shri Kiran Rao Subedar Sir, Vice President of Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. I express my sincere thanks to Honorable Dr. Abhay Subedar, Treasurer, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. I extend my sincere thanks to Honorable Shri Vijay Rao Sir Jamkar, Secretary, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. I express my sincere thanks to Honorable Dr. Sanjay Takalkar Sir, Joint Secretary of Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. I express my sincere thanks to Dr. वसंत भोसले सर, प्रिंसिपल ऑफ लेट सो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी. I extend my sincere thanks to Dr. संगीता औचार मैम, वाइस प्रिंसिपल लेट सो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी. इन सभी गेस्ट का मैं दिल से शुक्रिया तो अदा करती हूँ, और साथ ही साथ इन गेस्ट के बारे में कहना चाहूंगी कि गेस्ट का पद स्वीकारना या एक्सेप्ट करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसके लिए बहुत सारी खूबियों का मालिक होना पड़ता है, और वाकई हमारे इन तमाम चीफ पैटर्न्स में ये खूबियां मौजूद है। इसीलिए उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगी, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और यही चीज पैटर्न्स हमारे आज बुलंदियों पर ठहरे हुए है, और बुलंदियों पर ठहर कर ही वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा अपने स्टाफ को, अपने कॉलेज के मेम्बरान को इंस्पायर करते हैं, और इसीलिए मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ. एंड आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल दी resource person of online national faculty development program for accepting our invitation and for their valuable contribution. Dr. Prashant Vakte sir, Dr. Rohitas Nitonde sir, Dr. Malharikant Sondge sir, Dr. Nitin Darkunde sir,
डॉक्टर सोमनाथ यादव सर, डॉक्टर पल्लवी भोसले मैम, डॉक्टर विठल गोरे सर, डॉक्टर प्रभाकर हरकड़ सर, डॉक्टर वैजंता पाटिल मैम। आप सभी ने अगर गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये 9 अनमोल रत्न हमारे कन्वीनियर की तरफ से चुने गए हैं और ये 9 अनमोल रत्न हर रोज अपने लेवल पर हर एक को जितना मुमकिन हो सका उतना फ्रूटफुल नॉलेज, उतना बेनिफिशियल नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और अपने उस कीमती खजाने को आप तमाम में बांटने का एक अहम काम यहाँ अंजाम दिया है। I express my heartfelt thanks for all them. They all resource person are not only play the vital role of distinguished guests, but also sparing their invaluable time for us to grace this occasion for enlightening us with their commentable talk for lectures on the various topics and various issues and subjects. Thank all of you for clearing our concepts and enhancing our understanding pertaining to the topic. You have indeed put best of your efforts to make this event success and unforgettable event. We really owe you a lot. इसीलिए मैं इन रिसोर्स पर्सन के लिए भी कहना चाहूंगी कि इस सादगी पर कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पर कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। कि इन्होंने इन 7 दिनों में जो जंग लड़ी है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में, कि हमें कहीं भी पेन नजर नहीं आया, हम सिर्फ टेक्निकल के माध्यम से ये तमाम चीजें करते रहे हैं। और इसीलिए मैंने उनके लिए शेर कहा है कि उनके पास कलम तो या हथियार तो नहीं है, लेकिन बिना कलम के बिना हथियार के ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह हम विद्यार्थियों तक, उनके दिलों तक, उनके दिमाग तक पहुंच सकते हैं, ये बात उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन तमाम नवरत्न रिसोर्स पर्सन ने यहाँ पे करने की कोशिश की है। और इसके लिए मैं तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस रिसोर्स पर्सन में अपनी तमाम बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम दिया है। नेक्स्ट, now I express my heartfelt thanks to all the participants for their enthusiastic presence and joining for us in the grand event. और इसीलिए उनके लिए भी एक शेर कहना चाहूंगी कि आप जो आओगे तो मौसम दूसरा हो गया है, आप जो आए हो तो मौसम दूसरा हो गया है, लू का झोंका भी चला तो हवा हो गया है, हवा हो गया है। कि गर्मी की शिद्दत 2-2.5 घंटे अगर हम कम से कम इसकी तैयारी 3:30 से 5:30 तक भी रहा तो भी किसी को धूप महसूस नहीं हुई, गर्मी महसूस नहीं, और हर एक पार्टिसिपेंट ने बड़े ध्यान से इस सेशन से लुत्फानंदोज हुआ, उसका पूरा टेस्ट लिया, उससे पूरा बेनिफिट हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है और यही इस हमारे एफडीपी की कामयाबी का फुल टू प्रूफ सर्टिफिकेट है, सनद है, कि जिससे हमको यहाँ पर इन तमाम पार्टिसिपेंट का पूरा ये हिस्सेदारी मिली है। I would like to thank especially for our convener of the faculty development program, Mrs. Om Prabha Lokare ma'am, convener of FDP and coordinator of NAC IQAC लेट्स तो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय। इसीलिए मैं इनके भी बारे में कहना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं कि वो इंतहाई खामोश है, चाहे कुछ भी कह जाए सिर्फ स्माइल देती है, बाकी कुछ नहीं करती हो। तो इसीलिए उनके खामोशी पे, उनकी सादगी पे एक बहुत ही बेहतरीन शेर मुझे याद आया है कि वो भी सादे हैं कभी चाल बदलते नहीं हैं, वो भी सादे हैं कभी चाल बदलते ही नहीं, हम भी सादे हैं इसी चाल में आ जाते हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। और इसी तरह लोहकरे मैम की इस चाल में हम सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर उनकी इस चाल में पीछे पीछे आते रहे हैं और बिल्कुल इसी एफडीपी प्रोग्राम की तमाम उनकी बनाई गई प्लानिंग के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक हर एक ने अपनी कारकर्दगी, अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही ईमानदारी से और बड़ी ही अमानतदारी से यहाँ पे अंजाम दिया है। आई वुड लाइक टू थैंक आवर ब्रिलियंट, परफेक्ट, हेल्पिंग नेचर एंड ट्रूली आउटस्टैंडिंग टेक्निकल ऑफ दिस सेशन एफडीपी प्रोग्राम डॉक्टर राहुल देशमुख सर। अगर राहुल देशमुख सर का साथ ना होता तो इन 7 दिनों में जितने भी अभी हमारे पास के जो पार्टिसिपेंट रिमार्क आए हैं वो रिमार्क इस तरह से ना आते। कि राहुल देशमुख सर का जो सपोर्ट रहा है कि टेक्निकल तौर पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चाहे वो पीपीटी हो, माइक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो,
इसलिए मैं राहुल देशमुख सर का हमारे कॉलेज की तरफ से और कॉलेज के तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन सर। Last but not least, I express my heartfelt thanks to our organizer committee member of this faculty development program for their valuable suggestions, anchoring and contribution to this FDP program. Thanks one and all. और इस FDP को कामयाब बनाने वाले सभी हर एक मेंबर का मैं दिल की गहराइयों से और अपनी ओर से, अपनी कॉलेज की ओर से और कॉलेज के सभी स्टाफ की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसका जाने अनजाने में कोई नाम रह गया हो, उन तमाम का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस FDP का जो एंडिंग है वो नेशनल एंथम से होगा और इसीलिए सभी से ये गुजारिश है कि नेशनल एंथम के लिए सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। हमारे कॉलेज की जो कोकिला है संगीत विभाग से प्रोफेसर पल्लवी जोड़ेकर मैम, वो अपनी आवाज में यहाँ पर हमारे राष्ट्रगीत का गुणगान करेगी और हम सभी उसको बगौर सुनेंगे। इसलिए मैं उनको इस शेर से आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने नेशनल एंथम को यहाँ पर पेश करें और सभी खड़े होकर इस नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करें। इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन दूंगी। परेड सावधान। जोड़ेकर मैम प्लीज से नेशनल एंथम। Sorry, ma'am. You're not audible. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू पल्लवी जोड़ेकर मैम। और इसी नेशनल एंथम के बाद मैं एक शेर पर अपने इस सेशन को यहाँ पर पूर्ण विराम देती हूँ। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ लोकरे मैम। Thank you, ma'am. Now, with the permission of the president, I declare that the valedictory program is over. Thank you. Thanks a lot. Deshmukh sir, please end the meeting. Okay, ma'am. सगळ्यांचं अभिनंदन।